Hello everyone, welcome to the top 50 MCQ session on EduTap, in which we are going to cover the top 50 MCQs from the month of March 2023, and this is the part 2 of this particular series. जिसके अंदर we will be revising the everything that we have covered from the fast track sessions that we upload on our YouTube channel, and in this session we will be revising all these with the help of solving MCQs which are relevant for RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So guys, let's begin the session, but before that there is a very important announcement to all of you that we at EduTap are providing you a comprehensive guidebook for the aspirants of RBI Grade B, NABARD Grade A and the SEBI Grade A exam. So when I talk about these guidebooks guys, these guidebooks provides you the definitive answers to all your queries which pops up in your mind as an aspirant. It can be about the body in which you want to enter to. It can be about the exam. It can be about the preparation of the exam. For example, when I talk about the Reserve Bank of India, so what exactly the developmental role that RBI plays in the Indian economy. It can be about the exam, that what is the eligibility criteria, what are the different sections, what is the detailed syllabus of the exam. Now when I talk about the preparation, so what exactly are the sources that you must follow in order to clear this exam. So definitive answers to all these queries will be provided to you at one-stop solution. And guys, this guidebook is absolutely free, so what are you waiting for? Kindly download this guidebooks and get your solutions to all your problems in one-stop solution. Okay, so guys, I hope this is clear, and now let's get back to our session. So here you can see that, as I already told you, we are going to cover the top 50 MCQs, and all of you are required to tell me your answers to all these questions in the comment section, and at the end of the session you will be telling me that what exactly your score was out of 50 in this particular session. So guys, I really believe that all of you are ready for this particular challenge of the top 50 MCQs for the month of March 2023 part 2, and let's begin the session with the very first question. So guys, here is the very first question on the screen. So Ministry of Finance has amended the PMLA Act, that is Prevention of Money Laundering Act. And guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, the question is basically that under the modified PMLA rules, Finance Ministry has defined politically exposed person as which of the following. So basically you are required to go through these statements and identify that इनमें से वो कौन से लोग हैं जो कि politically exposed person है as per these modified rules. Are these the military officers which are entrusted with the prominent public functions by any foreign country, or they are the judicial officers which are entrusted with the prominent public functions by a foreign country, or they are the senior executives of the state-owned corporation? So please tell me your answers in the comment section below. So guys, let me give you a small hint that recently government has made it mandatory for the banks and financial institutions that they must keep a record of the financial transactions of the politically exposed person, and that is why this particular thing is in the news. And now let me tell you the right answer. The right answer is option E, that is all of the above, that is all A, B and C are the right answers. So here guys, you can see that a detailed explanation for all of you is being provided. And now let's talk something about the PMLA Act, which is a very very important act. So guys, let me tell you that there was a Vienna Convention. तो वियना कन्वेंशन इंडिया ने साइन किया था और उसके अंदर इंडिया की कुछ कमिटमेंट्स थी, एंड अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट इंडिया ने पीएमएलए एक्ट को लॉन्च किया, एंड दिस केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1st of July 2005. So I think that this is very very much clear to all of you guys. Now when I talk about another important update, that Finance Ministry has recently brought the transactions which involve द क्रिप्टो असेट्स. जी हाँ, जो क्रिप्टो असेट्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको उन्होंने पीएमएलए एक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है. एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, इट इज गोइंग टू एड आवर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन कैरिंग आउट द एक्शन अगेंस्ट द क्रिप्टो firms. So I hope that this is clear to all of you. Now let's move on to the next question of the today's session, and the next question is 2 million deaths can be prevented by 2025 and 7 million deaths can be prevented by 2030 if the policies recommended by one of the organization to reduce the sodium intake are being implemented. So basically recently one of these organizations has given its recommendation that how we can basically prevent 2 million deaths by 2025 and 7 million deaths by 2030. So how we can get it? Basically these recommendations are being provided by that organization, and let me give you a small hint to that when I talk about the headquarter of that particular organization, it is in Geneva. And the second hint is that the Director General of that particular organization is Dr. Tedros Adhanom.
So now I think that it is very easier for you to answer this question, and absolutely it is option B, that is World Health Organization. So WHO global report आई ही on sodium intake reduction, in which they have given these recommendations. Now the next question. So which of the following entities has joined hands with FMCG giant ITC to offer lending products and services to farmers who are a part of ITC's agriculture ecosystem? So guys, I have already, and most of the times I have told you that whenever there is a kind of partnership or MOU, there are two things that you are required to remember. First thing is the name of the parties involved, and the second thing is the aim of that particular MOU. तो जब हम बात करते हैं वो पार्टी जो इन्वॉल्व थी, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि एक पार्टी का नाम दिया गया है, दैट इज ITC, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ अनदर पार्टी जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है टू basically offer lending products and services to the farmers. So guys, now when I talk about the right answer, it is option C, that is Axis Bank. Next question. According to the Pay Nearby Women Financial Index, 10,000 plus women entrepreneurs have been dispensed over rupees 900 crore of the financial services. And you are required to tell me that with which one of the following organization that this particular organization has published this particular part. Is it SBI, World Bank, RBI Innovation Hub, HDFC Bank, or the Morgan Stanley? And here guys, this is a very direct question, and the right answer is option C, that is RBIH, that is Reserve Bank Innovation Hub. And guys, this was the third edition of this particular report. Now the next question. So SEBI has introduced a reward system for up to ₹dash to informants for sharing information. See guys, जो भी लोग यहाँ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट द असेट्स ऑफ द डिफॉल्टर्स, जो लोग ने डिफॉल्ट किया है, वो अगर उनके असेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए सेबी ने रिसेंटली एक रिवॉर्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द अमाउंट दैट दे विल बी गिविंग to that informant under this particular system. And here guys, the right answer is option A, that is rupees 20 lakh. So guys, you are really required to always remember such kind of details which are being launched, and especially जब ये कोई रेगुलेटरी बॉडी की ऐसी कोई न्यूज आती है, तो उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से उसको कवर करना है. नाउ लेट मी टेल यू दैट दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज 20 लाख ये कहां से दिया जाएगा. बेसिकली दिस अमाउंट विल बी पेड फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड. तो ये वो फंड है जहां से इस पर्टिकुलर अमाउंट को दिया जाएगा टू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन along with the Central Warehousing Corporation have signed an MOU, and the aim of this MOU is to facilitate financing under the ENWR, that is Electronic Negotiable Warehousing Receipt. तो आपको बताना है उस बैंक का नाम जिसके साथ मिलकर सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने ये MOU साइन किया है, जिसका एम है दैट दे विल बी फैसिलिटेटिंग फाइनेंसिंग अंडर दिस Electronic Negotiable Warehousing Receipt. And guys, the right answer is Punjab National Bank. Next question. IDFC First Bank has partnered with the Anantham Online, which is a technology startup focused in digital parking to enable acceptance of digital rupee at Dash Metro's parking location. So guys, now you must be thinking that why exactly this particular question is in the news, because there is nothing special here. But let me tell you, I will be giving you the exact reason that why it was in the news. So when I talk about the right answer to this question, guys, it is option E, that is Kochi. But the reason behind this particular question, that why exactly it has been asked, is because Kochi Metro has become India's first metro to accept the digital currency for parking. So guys, here Kochi Metro has this particular kind of landmark achievement that it has become the first metro to accept the digital currency for parking, and that is why it is required to be covered from the exam point of view. Now the next question. Which of the following companies has signed an MOU with NIT Surathkal? And the reason behind that is the cooperation in the research and development of emerging technologies and technical solutions. तो आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने NIT सूरतकल के साथ ये MOU साइन किया है. You will be given these 5 options, and you are required to tell me what is the right answer in the comment section. So guys, the right answer is Bharat Electronics Limited. Now the next question. So which of the following companies has signed a master research alliance with the Indian Institute of Chemical Technology, a CSIR lab? And guys, what exactly is the aim behind this particular market research alliance between these organizations? That is to work towards a number of collaborative research and development in areas such as valorization of low value refinery streams and carbon dioxide capture. And now when I talk about the name of that organization which has basically signed this MRA
agreement with the IICT, and the name of that organization is Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, that is MRPL. Now the next question, the first edition of the Women Icons Leading Swachhta Wins Award. See guys, Wins Award has been launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs recently. And now when I talk about this particular award, this award basically was being launched to highlight the impact of women in sanitation and waste management. तो इसके लिए बेसिकली अवार्ड इनको दिया जा रहा है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दैट दिस पर्टिकुलर अवार्ड, फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड द एप्लीकेशन कैटेगरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. Here you can see that all the self-help groups, micro enterprises, startups and the NGOs, all of them are basically eligible to basically apply under this particular award. Now the next question. So India has bagged golden and silver star at the International Golden City Gate Tourism Award 2023. So यहाँ पर आपके सामने basically question ये है कि ये इंडिया ने जो ये अवार्ड जीता है ये इस कैटेगरी के अंदर जीता है. एंड ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये बेसिकली कौन सी कंट्री के अंदर होस्ट की गई है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. सो इज इट बर्लिन, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई एंड टोक्यो. सो गाइस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बर्लिन. तो आप यहां देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये अवार्ड बेसिकली बैक किया है. एंड दैट पर्टिकुलर कैटेगरी इज टीवी सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल. दैट इज व्हाट that particular category is all about. Now the next question. So guys, this is basically a question from the international news. Ramchandra Paudel of Nepali Congress has been elected as the dash president of Nepal. See guys, let me tell you that students will always be covering this particular name. Absolutely it is very much important to be covered, but यहाँ पर question कभी कभी एक कुछ अलग lines पर भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, and you must be ready for that particular kind of questions. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से basically president बने हैं ये नेपाल के, and the right answer is third. And guys, this is a homework for all of you, that you are required to tell me that who was the first and second president of Nepal. So please tell me your answers in the comment section. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, which is here on the screen. So Rohit Java will take as MD and CEO of which of the following companies. So guys, recent appointments भी काफ़ी ज़रूरी हैं. जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके MD CEO चेंज होते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन चेंज होते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी है याद रखना कि बेसिकली कौन है वो पर्सन जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. सो हियर गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट दैट रोहित जावा विल बिकम MD and CEO of Hindustan Unilever Limited. That is the right answer. Now the next question. So which of the following ministries has launched the high price DAM and पुष्प? तो गैस ये दो तरीके की फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड की है मिनिस्ट्रीज ने, और आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है उन मिनिस्ट्रीज का नाम जिन्होंने कि इनको रिलीज किया. इज इट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पावर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर. तो आप देख सकते हो कि here DAM stands for Day Ahead Market and PUSP stands for the Surplus Power Portal, which is an initiative to ensure greater availability of power during the peak season demand. So that is what the right answer is. Now let's move on to the next question. So guys, Union Minister for MSME ने recently launch की है MSME Competitive Lean Scheme, और question ये है that under this scheme the MSMEs will implement lean manufacturing tools. तो कौन से वो tools हैं जो कि इस lean scheme के अंडर हैं? ये lean manufacturing tools कौन से हैं जिसकी implementation MSMEs द्वारा ये ministry कराना चाहती है through the lean scheme? Is it 5S, Kaizen, Pokayoka, both A and B, or all A, B and C? That what is the right answer? So guys, when I talk about the lean, it is an extensive drive which is being launched by the government of India so that they can create awareness among the MSMEs about these particular lean manufacturing tools and how they can impact it. See guys, when I talk about this, this is going to reduce the wastage. It is going to reduce the wastage of these MSMEs. It can increase the productivity of this particular MSMEs. It can increase the quality of the products that they are basically manufacturing. It can help them in expanding their market. So these are some of the basically impacts that is going to happen after the implementation of the lean scheme. So now when I talk about the right answer, it is option E, that is all A, B and C is the right answer. Now let's move on to the next question. So an MOU on establishing a dash supply chain and innovation partnership under the framework of India-US commercial dialogue has been signed between the two countries, and you are required to tell me that what exactly
जो ये जो सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप है ये कौन सी चीज के लिए हुई है? इज इट फॉर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इज इट फॉर द ड्रोन, solar panel, lithium, or none of the above? See guys, kindly look into this particular question very carefully and then tell me what is the right answer. Kindly choose the appropriate option that you think is the right answer. So let me tell you what is the right answer. It is option E, that is none of the above. See guys, always it is not the case that you will find the answers among these four options. It can be a case that the right answer is none of the above. And when I talk about this supply chain and innovation partnership, it has been done for the semiconductors. I hope this is clear. Now let's move on to the next question. So which of the following organizations or ministries has released the task force report? और उस task force report का नाम है Production and Promotion of Organic and Biofertilizers with a special focus on improving economic viability of गौशालास. So guys, मैं आपको बता दूं कि एक task force को यहाँ पर constitute किया था नीति आयोग ने, and that is why the right answer to this question is option A, that is नीति आयोग. अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर जो टास्क फोर्स है उसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, एंड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डो नॉट वरी अबाउट इट. अगर हम बात करते हैं इस टास्क फोर्स की जो कि नीति आयोग ने कॉन्स्टिट्यूट की थी, इट वाज हेडेड बाय प्रोफेसर रमेश चंद. तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नाउ अगर हम बात करते हैं कि जो टास्क फोर्स रिलीज की गई है, तो जरूर कोई ना कोई उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होगा उनका, एंड दैट ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक गौशालास इकोनॉमिकली वायबल एंड ऑल्सो दैट दे कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एंड द अबेंडेंड कैटल्स. जो स्ट्रे और अबेंडन कैटल्स हैं उनकी जो ये प्रॉब्लम्स है उनको यहां पर ये एड्रेस किया जा सके. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज proper utilization of cow dung. So that was basically the objective of launching and coming up with this kind of task force. Now the next question guys, Ministry of Defense has signed a contract of procurement of 6 Dornier 228 aircraft for the Indian Air Force from HAL at a cost of, so basically here you are required to tell me that at what cost it is. So it is a very direct question guys. The right answer is 667 crores. Now the next question. The first edition of Naval Commanders Conference 2023 has recently begun on board which of the following Indian naval ships? See guys, काफी easier questions हैं, बहुत ही general questions हैं जो कि आप देख सकते हो कि काफी जनरल करंट अफेयर से ये क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं. एंड इन दिस क्वेश्चन यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू टेल मी एंड आइडेंटिफाई द इंडियन नेवल शिप ऑन विच दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस वाज ऑन बोर्डेड. एंड हियर गाइस द राइट आंसर इज INS विक्रांत. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन्फोसिस प्रेसिडेंट मोहित जोशी उन्होंने रिसेंटली एज अ MD एंड CEO डेजिग्नेट यहाँ पर ज्वाइन किया है कंपनी के. तो वो कौन सी कंपनी है उसका नाम आपको बताना है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज टेक महिंद्रा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. RBI ने रिसेंटली अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ सुमंत कठपालिया. सी गाइस, सुमंत कठपालिया को रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा बैंक है जिसके वो MD एंड CEO रीअपॉइंट हुए हैं. इज इट द साउथ इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, J&K बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक? सो गाइस, इसी तरीके से जो रीअपॉइंटमेंट्स हैं या अपॉइंटमेंट्स हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स इन द न्यूज़, वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि रीसेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड हियर गाइस व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडसइंड बैंक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो Dash and Tata Group have signed an MOU. See guys, once again there is a news on the MOU. What is the question? It is on the name of the party. One party is being given, that is Tata Group, another party is being asked, and the question and the aim of that particular MOU is to manufacture fighter wings in India. तो fighter wings को manufacture करने के लिए इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप ने कौन सी कंपनी के साथ MOU साइन किया है? The name of that company is Lockheed Martin. That is the right answer. Now the next question. Ministry of Corporate Affairs has appointed which of the following companies to assist in formulating annual capacity building plan? So guys, अगर हम बात करते हैं इस एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान की, so basically with this MCA, that is Ministry of Corporate Affairs, is aiming to build the capacity among its cadre and its post and other organizations so that they can make them फ्यूचर रेडी. सी गाइस, उनको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए बेसिकली ये स्टेप लिया है MCA ने, एंड विद दिस दे आर गोइंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द विजन ऑफ न्यू इंडिया. एंड गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट दैट और नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विद दिस which has been appointed, so here guys the right answer is
Grant Thornton Bharat LLP. That is the right answer. Now the next question. So under the ambit of Sagar Mala, Ministry of Ports, Shipping and Waterways has sanctioned 8 floating jetty projects, and in this 4 each in which of the following states. So you're required to tell me in which states basically these particular jetty projects have been sanctioned. Is it Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, both A and B, or none of the above? So guys, kindly identify what exactly is the right answer to this question. In the meanwhile, let me tell you about some important information about the Sagarmala. When I talk about the Sagarmala, guys, the nodal ministry for the Sagarmala program is Ministry of Shipping. And when I talk about that, why exactly this particular program was launched, it was launched to reduce the logistic cost for both the domestic and the EXIM cargo. So I hope that this is clear to all of you. So now when I talk about the name of the states from where these 8 floating jetty projects have been sanctioned, the right answer is option D, that is both A and B. That is Karnataka and Tamil Nadu is the right answer. Now the next question. So here guys, you are required to tell me the name of the person who has been appointed as the LIC interim chairman. तो interim chairman recently LIC के कौन बने हैं ये आपको बताना है चैट बॉक्स के अंदर guys, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं. So quickly tell me what is the right answer to this particular question. तो ये एक और क्वेश्चन था जो कि आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट से था, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर इट इज ऑप्शन ई, दैट इज सिद्धार्थ मोहांटी. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, दैट मींस किसको रिप्लेस करके सिद्धार्थ मोहांटी जो है अपॉइंट हुए हैं एज ए इंटरिम चेयरमैन ऑफ LIC. दैट पर्सनस नेम इज MR Kumar, who was earlier serving as the chairman of LIC. Now the next question. Who among the following has won the Best Actor award at the 95th Academy Awards 2023? See guys, we all know that Oscar Awards recently दिए गए थे, जिसको यहाँ पर Academy Awards के नाम से भी जाना जाता है. और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि कौन सा वो पर्सन है जिसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है रिसेंटली इन द 95th Academy Award 2023. Let me tell you that this particular person has won the award for his acting skills in the movie The Whale. So guys, I really believe that it is very easier for you to answer this question, and the right answer is option C, that is Brandon Fraser. Now comes to a very important point guys. The next important award is the Best Documentary Short category, which was won by The Elephant Whisperers. और उसके जो यहाँ पर आप देख सकते हो that it was a कार्तिकेय गोंसाल्विस and गुनीत मोंगास फिल्म. और यहाँ पर आती है एक और important news, that is Best Original Song was basically won by Indian song, that is Natu Natu of the movie RRR. And यहाँ पर आप देख सकते हो guys, these are Chandra Bose and MM Kuravani who were basically there to accept this Oscar award. And now guys, let me tell you another important thing, that recently this Natu Natu song of the RRR movie also won the Golden Globe Award for the best song, and this song is basically getting more and more laurels day by day. Now let's move on to the next question. So guys, here you are required to tell me the name of the organization which has signed an agreement with the international shipping company Euronav, and the aim of that is to secure the purchase of very large crude carrier as a part of the operation to remove more than 1 million barrels of oil from a decaying tanker of Yemen's Red Sea coast. तो यहाँ पर काफी simpler lines पर question है. It is just asking you the name of the organization which has signed this particular agreement, and the right answer to that particular question is basically, let me give you a small hint, that this particular organization is headquartered in New York. Now I think it is very easier for you to answer this question. Absolutely, it is option B, that is United Nations Development Program. Now the next question. So which of the following has rebranded itself as बंधन म्यूचुअल फंड? तो बंधन म्यूचुअल फंड कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खुद को रीब्रांड किया है एज अ बंधन म्यूचुअल फंड? द राइट आंसर इज IDFC Mutual Fund. So guys, IDFC Mutual Fund is the right answer to this particular question. Now let's move on to the next question. So India has remained the world's largest arms importer for the 5-year period. See guys, recently SIPRI ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर फॉर द 5-year period, that is from 2018 to 2022. And the question for you is that which of the following country is the second largest supplier of arms to India? तो इंडिया को सबसे ज्यादा आर्म सप्लाई करने वाली सेकेंड लार्जेस्ट country कौन सी है? Is it France, USA, Russia, Israel, South Korea? So this is what you are required to tell me in the comment section guys. So please tell me as per the SIPRI report what is the right answer to this question. So here guys, you can see the right answer is
France, as when I talk about the country which is having the largest supply, which is the largest arms supplier to India, it is Russia, that is 45.1%, followed by France, that is at 28.6%, followed by United States on the third position with 11.1%. And guys, here you can see that India was the world's largest arm importer. अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के बाद कौन सी कंट्री थी, that is Saudi Arabia. ठीक है जी, I hope this is clear to all of you. And there is one more very important thing that I would like to tell you here, that India also accounted for 11% share of the total global arm imports in this particular period. I think that it is very much clear to all of you. Now let's move on to the next question. So as per the recent news, dash digit hallmark unique identification on gold jewelry has been made mandatory from the 1st of April 2023. So guys, ये जो HUID टैग के साथ अब से गोल्ड ज्वेलरी की सेल होने लगेगी, तो आपको बताना है कि कितने डिजिट का आखिर ये हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होने वाला है. लेट मी टेल यू हियर दैट पहले ये जो कोड था ये 4 डिजिट्स का होता था, एंड 2 years बैक बेसिकली इसको बंद कर दिया गया था. अब अगर हम बात करते हैं तो अब जो नया कोड होने वाला है वो कितने डिजिट्स का होगा गाइस, इट विल बी ऑफ द 6 digit कोड. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ वॉलंटरी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम एंड द आई दीक्षा पोर्टल. तो कौन सी वो मिनिस्ट्री है जिसने कि इसको लॉन्च किया है, दैट इज वॉलंटरी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम एंड आई दीक्षा पोर्टल. गाइस, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर. एंड लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट information about आई दीक्षा पोर्टल. So here you can see that it is a platform which has been designed to serve as a one-stop shop for all energy efficiency and decarbonization needs. तो जितनी भी हमारी energy efficiency और decarbonization needs हैं इंडियन energy intensive industries की, उसके लिए one stop shop है आई दीक्षा पोर्टल. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, इसरो ने रिसेंटली रिलीज की है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया, और उस एटलस के अकॉर्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता, विच इज हैविंग द हाईएस्ट एक्सपोजर टू द लैंडस्लाइड्स. तो इज इट रुद्रप्रयाग, थ्रिसूर, एजॉल, राजौरी एंड पलक्कड़. सो गाइस, वी कैन सी हियर the list of all those particular top 5 districts. You can see on the top it is Rudraprayag, followed by Tehri Garhwal, थ्रिसूर, राजौरी एंड पलक्कड़. तो अब यहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट बचता है जो कि यहाँ पर नहीं है, एंड दैट इज एजॉल, मिजोरम. दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो पीएम ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. तो इसी इवेंट के दौरान उन्होंने फैसिलिटेट किया है अवॉर्डीज को ऑफ द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और आपको बताना है इनमें से वो कौन सी एंटिटी है जिसने इस अवार्ड को जीता है. सो दिस इज ऑन अ वेरी वेरी इजियर लाइन्स, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी द नेम ऑफ द एंटिटी विच हैज वन दिस particular award. And here guys, the right answer is Lungli Fire Station of Mizoram. So basically it has won this award along with Odisha State Disaster Management Authority. So guys, I hope this is clear to all of you. Now the next question. So MIDH, that is Mission for Integrated Development of Horticulture. तो यहाँ पर इन्होंने recently 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इनको अप्रूव किया है, और आपको ये बताना है कि ये जो 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है क्या उनको करेक्टली मैच यहाँ पर किया गया है और किसको सही मैच किया गया है, ये आपको बताना है चैट बॉक्स के अंदर. तो गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं MIDH की, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट मी टेल यू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव. तो अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द कमलम, दैट इज ड्रैगन फ्रूट, इट इज बेसिकली इन बेंगलुरु, कर्नाटका. ठीक है जी. अगर हम बात करते हैं COE फॉर मैंगो एंड वेजिटेबल्स, इट इज बेसिकली इन जाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एंड फॉर द वेजिटेबल एंड फ्लावर्स इट इज इन साउथ गोवा. सो आप देख सकते हो दिस इज व्हाट द राइट आंसर इज. और अगर हम आपको बताने वाला था अबाउट MIDH, तो अगर हम बात करते हैं गाइस MIDH स्कीम की, इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2014, और नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, which is basically the nodal ministry for this MIDH scheme. And when I talk about this scheme guys, this scheme is basically a sub scheme of Green Revolution कृष्णोन्नति योजना. ठीक है जी. तो कृष्णोन्नति योजना की बेसिकली ये है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड 100% methanol powered prototype truck has been recently unveiled, and the question is basically
ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ऑफ कन्वर्टिंग डीजल, पेट्रोल एंड सीएनजी इंजन्स इनटू ऑपरेटिंग ऑन 100% मिथानॉल, ये इनिशिएटिव है, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो लिया गया है नीति आयोग द्वारा, और ये किस एंटाइटी के साथ मिलकर लिया है ये इनिशिएटिव, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी। इज इट आयशा मोटर्स, आईआईटी मद्रास, टाटा मोटर, आईआईटी मुंबई, और नन ऑफ द अबव? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, दैट इज none of the above. So here guys you can see that this particular initiative is along with Ashok Leyland and ISC Bangalore. That is what the right answer is. Now the next question. So India will for the first time participate in Talisman Sabar exercise. तो ये जो exercise है ये basically कौन सी countries के बीच में होती है ये आपको बताना है chat box के अंदर. See guys, Talisman Sabar exercise रिसेंटली हुई थी, इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द कंट्री विच होस्टेड दिस एक्सरसाइज इट वाज ऑस्ट्रेलिया. तो लेट मी टेल यू दैट दिस तालिस्मान साबर एक्सरसाइज, दिस इज बेसिकली अ बाईएनुअल एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस. And now for the first time India has also participated in it. Now there comes another question that this year Malabar exercise, see guys, Malabar exercise was also in the news, and the country is going to become the first ever time it is going to conduct this Malabar exercise, and once again the name of that country is Australia. I hope this is clear to all of you. Now let's move on to the next question. So Ministry of Defence has signed a contract for normal refit of Sindhu Kirti. See, Sindhu Kirti submarine, and at which of the following companies? That is what you are required to tell me here. Is it Goa Shipyard, Hindustan, Bharat Dynamics, Cochin Shipyard, Reliance Naval and Engineering Limited? The right answer is option B, that is Hindustan Shipyard Limited. Now the next question. So guys, the question is Asia's first woman. See guys, I am marking this question as a star question because this is a very important question. आप देख सकते हो एशिया की फर्स्ट वुमेन लोको पायलट का नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, which has recently operated the Vande Bharat Express. What is the name of this particular first women loco pilot of Asia? The name of that particular person is Surekha Yadav. Now the next question. France-led multinational level exercise La Pirouse 2023 was recently held in the Indian Ocean region, and you are required to tell me that कौन सी वो country है इन countries में से which has not participated in this particular exercise. कौन सी country ने participate नहीं किया है ये आपको बताना है. इसके लिए पता होना चाहिए कि वो कौन सी countries हैं जिन्होंने इसके अंदर participate किया है. तो अगर हम बात करें कि जिसने participate किया है, these are Australia, US, India and Japan, and the country which has not participated in it, it was Indonesia. I hope this is clear. Now let's move on to the next question. So guys, Swiss firm IQ Air ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, जहां पर आपको बताना है कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स डैश मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2022. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से नंबर पे है इन द टर्म्स ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री? दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू टेल मी. एंड हियर गाइस यू कैन सी दैट लाहौर वाज रैंक्ड 1 in air quality, basically in the worst air quality, and when I talk about the India's position, India was on the 8th position in this particular list. Now let's move on to the next question. So guys, RBI ने recently grant किया है IFC status, that is infrastructure finance company का status, और आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सी entity है जिसको ये status provide किया गया है. So guys, these are the kind of questions you can always expect in the exam, and now let me tell you what is the right answer. It is Indian Renewable Energy Development Agency, which has been provided the IFC status by the Reserve Bank of India. Now the next question. So which of the following entities has launched the Blossom Women Saving Account with 7% interest rates? See guys, ऐसा जब भी आप क्वेश्चन देख सकते हो कि ये टिपिकल बैंकिंग क्वेश्चन है कि रिसेंटली कोई नई अकाउंट सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है, स्पेशली वुमेन्स के लिए की है या फिर ओल्ड एज पीपल के लिए की है, चिल्ड्रंस के लिए की है, तो ऐसी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द राइट आंसर टू दिस, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, रिसेंटली डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी हैज वन द 32nd व्यास सम्मान, एंड आपको ये बताना है कि कौन सी नॉवल के लिए उनको ये 32nd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है. सो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट नॉवल. दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस. आई एम जस्ट गिविंग यू द राइट आंसर्स टू सच काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्कशन इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर. इट इज ऑप्शन सी, दैट इज पागल खाना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहां पर आपको बताना है उस एंटिटी का नाम जिसने अपॉइंट किया है तबलेश पांडे जी को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. क्या है उसका नाम? सी गाइस, वी हैव ऑलरेडी
covered that particular organization in this particular session, that is LIC, जिसके चेयरमैन पहले थे MR कुमार और जिनको रिप्लेस किया है सिद्धार्थ मोहांटी ने एज इंटरिम चेयरमैन. तो उसी कंपनी ने यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर रिसेंटली लॉन्च किया है अपने, दैट इज तबलिश पांडे. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइज वंस अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन अ वेरी वेरी वेग लाइन. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, अगर वहां पर कुछ हाईलाइट हुआ है तो दैट्स वाई यू कैन सी हेयर. And I will be telling you the reason that India has recently celebrated 75 years of its friendship with Australia, and that is why this particular event was celebrated. And you can see that in the Narendra Modi Stadium, both the prime ministers of both the countries basically came there. So let me tell you that this is basically, we are talking about the Border Gavaskar Trophy, and India has clinched this particular part. But the question is कि कौन सी कंट्री के साथ बेसिकली इसको मनाया जाता है. रेलिवेंस क्या है इस न्यूज का, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों आखिर ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th of March, and you are required to tell me that what is the theme for this particular day. Whenever there is important international days or important days, what you are required to cover, first of all the date on which it is observed, and the second thing is the theme. तो डेट आपको पता है, दैट इज 14th March. थीम क्या है? द थीम फॉर दिस पर्टिकुलर डे इज मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन. दैट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने रिसेंटली डेटा दिया है. बेसिकली एनएसओ जो काम करता है मॉस्पी के अंदर, उन्होंने डेटा दिया है अबाउट द होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो आपको ये बताना है कि ये जो WPI बेस्ड इन्फ्लेशन है, ये अपने 25 मंथ के लो पर था, एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर परसेंटेज वाज इन द February 2023. दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो ये आपको एग्जाम के लिए काफी लेटेस्ट डेटा आपको हमेशा याद रखना रहेगा. इस क्वेश्चन की बात करें तो सही आंसर है 3.85%. दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो गाइस, इंडिया का पहला यूएस डेट ETF फंड लॉन्च किया गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस है जिसने कि इसको लॉन्च किया है. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस इज बंधन म्यूचुअल फंड. Now let's move on to the next question, guys. The next question is about the 13th edition of Indo-Bilateral Armor Exercise. The name of that exercise is बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023. और ये एक्सरसाइज कहां पर हुई थी, वेन्यू उसका पता होना काफी जरूरी है. दैट इज जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, इंडिया. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री विद व्हिच इट वाज being conducted by India, it is option D, that is Singapore. Now the last question of the today's session, guys. The question is on the World Consumer Rights Day, और आपको बताना है कि कौन सी डेट को इसको ऑब्जर्व किया जाता है. दिस इज अ वेरी इजियर लाइन. I want all of you to answer this question correctly in the comment section. So in the meantime, I can tell you that what exactly the theme of this particular day was. The theme was empowering consumers through clean energy transition. Empowering consumers through clean energy transition was the theme. When I talk about the date on which it is celebrated is 15th of March. So guys, I believe that this particular session was very much useful and fruitful to all of you. And now this is the time that you must tell me your scores in the comment section, that what exactly your score is out of 50 in this particular session in the comment section. And guys, if you are still new to our YouTube channel, kindly subscribe to our channel. And if you want to access the PDF of these particular sessions, kindly join our Telegram channel as well, where you can access the PDF of our sessions. So guys, kindly tell me what exactly your score was out of 50, because it is very very important for you to analyze what your strength areas are and what exactly your weak areas are. So guys, thank you for joining us, and if you are having any kind of queries in this particular session, you can comment them in the comment section, and you can also share your queries on the hello@edutap.co.in, and you can also call us at 8146207241. So thank you for joining us. Wish you all happy learning.